Hello, welcome back, and we are gonna move for the part B of the mucoskeletal system, and we need to check with the muscular muscle structure or muscular fiber structure. So each muscle has been composed of, we already shared, of the neurons as well. So in parallel to the neurons, what is there? There are some structures like we can say actin and myosin fibers or filaments, and similarly those are also known as myofibrils. And there are sarcomeres and means muscular fiber units are there are units of muscular fibers, they are known as sarcomeres. And there are z lines, these are the boundaries of sarcomeres. And similarly, there are some proteins, they are known as titin. And there are, we can say, inhibitory protein as well, known as troponin, tropomyosin. These are part of the muscular fibers, and they are also known as muscular filaments. Similarly, there are some, we can say, sarcomeres who are considered to be like muscular membrane as well. Like in a cell, there are, we can say, plasma membrane, where in case of we consider the muscles, there would be, we can say, sacrolima membranes. Okay, and those sacrolima membranes are responsible to maintain action potential within the muscles. Like over here, sacrolima is just same like as we consider there is a cell, and each cell do has a cell membrane. Same like that, there is a muscle, and the outer lining of the muscle represents sarcolemma. That is actually a muscular membrane. Nothing different. There is no difference at all, rather than this one. Similarly, what happens during the action potential, or how sarcolemma does work? So during polarization, many times it happens like the positive charge is maintained inside the cell, and sodium ions are more abundant outside the cell. And potassium and ions and negative, or the negative ions known, are abundant inside the cell. Mean there is a positive charge outside the cell and there is negative charge inside the cell. So what happens? Sodium ion tends to diffuse into the cell, mean the positive charge from outside of the cell tries to move inside the cell, and the negative charge from inside the cell moves towards outside the cell. So what happens? It is gonna make, we can say, a sodium potassium pump. Okay, and this sodium potassium pump is gonna can be understand by this image. Suppose these are the muscles of a palm. Okay, an entire muscle that can be observed here. There, in a B part, these muscles are amplified to check like how bundles of muscle cells are there. These are the muscle cells, myofibrils, and the connective tissues. And sarcolemma here, this one is a muscle, and there is a muscular membrane known as sarcolemma. Okay, this membrane is considered to be a double layer membrane. One of the layer is considered to be a smooth layer, and another one is considered to be a loose layer of the muscles. Okay, so these there are the myofibrils, muscular fibers, sarcomeres. So Z line, actin filament, myosin filament, titin filaments. These are the inhibitory proteins already we already discussed. So this is actually a whole structure of a skeletal muscle. How muscles are there, and the bundle of muscles. Everything has been mentioned there. Okay, I hope it makes sense. So what happens? How action potential is achieved during the polarization? Sarcolemma has a positive charge. Positive charge move inside, and the negative charge moves outside. Okay, and what happens once the charges are gonna move? The acetylcholine is gonna be released, and once acetylcholine is gonna be released, that is responsible to transmit the message. Okay, and so depolarization occurs once the negative charge moves from inside the cell towards outside, and repolarization also occurs
And when it occurs, once there would be positive ions move, especially potassium ions move outside the cell and restoring the charges inside and outside of the charge, outside of the muscle or muscular fiber. So that is gonna means work for the repolarization. So depolarization and polarization, depolarization, and repolarization. These are the phenomena which are gonna help how muscles are actually working. And the contraction and relaxation of the muscle is also achieved. And if there are, we can say, somehow toxin induced within the muscles, so this we can say contraction and relaxation will get disturbed. Why? In case of tetanus injection, like Clostridium tetani releases certain neurotoxins, and these are gonna inhibit acetylcholine activity, and there would be no muscular movement at all. और वहाँ पे जो मसल फाइबर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं उस न्यूरोटॉक्सिन की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर वी कैन से पैरालिसिस भी होती है सम टाइम, और इसी तरह से वी कैन से क्लॉगिंग या कोगुलेशन हो जाती है, जो कि फिर आगे जाके वजह बनती है वहाँ पे वी कैन से सेलुलर निक्रोसिस वगैरह की। इसी तरह क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलाइनम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से भी वहाँ पे पॉइजनिंग होती है, और इस तरह से भी वी कैन से कि देयर वुड बी डैमेज, मस्कुलर डैमेज एसोसिएटेड विद दोज माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। अच्छा, अब अगर हम बात करें फर्दर जाके कि किस तरह से एक्सरसाइज वगैरह इम्प्रूव करती है, तो एक्सरसाइज का की रोल है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और मस्कुलर टोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वी कैन से हेल्दियर मसल्स। तो जब एक्सरसाइज नहीं होगी तो मसल्स हेल्दी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे फैट आके डिपॉजिट हो जाती है, मसल डिग्रेड हो जाते हैं और ब्रेन मैप नहीं कर पाता वहाँ पे, और इस तरह से फिर फैट्स के डिपॉजिट की वजह से मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाती है बॉडी में, वी कैन से स्लो हो जाती है बॉडी 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 के अंदर जो मसल्स हैं दे आर नॉट गोना कॉन्ट्रैक्ट, वो स्लोअर डाउन हो जाते हैं, और जो ही स्लोअर डाउन होते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वी कैन से देयर वुड बी अ लॉट ऑफ डिसकम्फर्ट हैज़ बीन अचीव्ड विद इन द बॉडी। और इसी तरह एक डिजीज़ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें इसी तरह से होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें ना टिश्यू मस्कुलर टिश्यूज़ आर रिप्लेस्ड बाय फैट, तो फिर वहाँ पे फैट डिपॉजिट होते जाते हैं, लोगों की एक्टिविटी कम हो जाती है, और इस तरह से ये डिज़ीज़ बड़ी ख़तरनाक हो जाती है, और इवन इसकी वजह से हार्ट फेलियर और डेथ भी हो जाती है लोगों की। मिस्थीनिया ग्रेव्स भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बन जाती हैं, और ऑटो एंटीबॉडीज़ भी मसल्स में जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वी कंसिडर के वहाँ पे हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ के बनने की वजह से भी मसल फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑटो एंटीजन और ऑटो एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, और उसकी वजह से मस्कुलर फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं। सो इट मीन एजिंग एंड मस्कुलर सिस्टम, तो एजिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने बोला, ये पहले से ही कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कि जब मस्कुलर फाइबर रिप्लेस हो जाएं फैट से तो एजिंग बढ़ती है। और इसके अलावा मेजर मसल्स ऑफ द बॉडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको जाके देखना चाहेंगे। बॉडी के जो अगर मसल सारे एक्टिव हैं तो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द एक्सरसाइजेज, और हिज वी कैन से मूवमेंट वुड बी पॉसिबल लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ऑल दीज मूवमेंट्स आर पॉसिबल। हेड एंड नेक के मसल्स की अगर हम बात करें और उनके फिर एक्टिविटीज़ की बात करें, तो हम ज़रा आते हैं हेड एंड नेक मसल, फिर मसल्स ऑफ ट्रंक, मसल्स ऑफ हिप एंड लेग्स, और मसल ऑफ शोल्डर एंड आर्म, ये सारे मसल्स हमने देखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहली डायग्राम है जिसमें हम देखना चाह रहे हैं मसल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के ओवरऑल मसल्स। तो ये यहाँ पे स्टार्ट होंगे, ट्रेपेजियस है, डेल्टॉइड है, इंफ्रास्पाइनट्स है, टेरेस मेजर है, ट्राइसेप ब्रांकाई है, लेटिस्मस डॉर्सी है, बाइसेप ब्रांकाई है, ब्रांकियो रेडियलिस है, ब्रांकियालिस है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये सारे मसल्स हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी का जो वी कैन से कि पोस्टीरियर व्यू है उसमें। अब अगर हम बात करें एंटीरियर व्यू की ह्यूमन बॉडी की, तो एंटीरियर व्यू में भी हमें कुछ मसल्स जैसे सोलिस है, वेस्टस लैटरल्स है, वेस्टस मीडियल्स है, और पिक्टिनस है, रेक्टस
एब्डोमिनस है, एक्सटर्नल ऑब्लिक है, ट्राइसेप ब्रांकाई है, ये सारे मसल है। मैसेटिसर है, ये जॉज की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला मसल। तो इस तरह से ये सारे मसल्स को जानना बड़ा ज़रूरी है हमें। अब अगर हम हेड एंड नेक के मसल्स की बात करें तो उसमें जैसे फ्रंटियल्स है, और इसका मतलब है रेजेस आईब्रो, रिंकलेस स्किन होती है, और इस तरह से ऑर्बिक्यूलरिस ओकलाई है, आइज़ की क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, स्कोरिजन मीडियल साइड ऑफ ऑर्बिट है, और इनसर्कल आइज़, मतलब ये इनके फंक्शन, ओरिजिन और कहाँ कहाँ पे ये काम करते हैं ये बताया गया। मैसेटर का मैंने बोला जॉज को क्लोज करने में हेल्प करता है, और इसी तरह से सप्लिनस कैपिटस है, टर्न हेड ऑन अ सेम साइड, मतलब जैसे हम सर को दो तरह से डिफरेंट साइड्स पे प्लेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। So that has been possible because of splenus capitis muscle. So these are the muscles of head and neck. If we want to check with the muscles of like we consider trunk, so the muscle of trunks may include like everything has been mentioned, like sternocleidomastoid, sternocleidomastoid, mastoid, trapezius, pectorals major, serratus anterior, external oblique, internal oblique, trapezius, ये सारे मसल्स हमें ट्रंक के दिखाए गए हैं, और ये क्या करते हैं, ये ट्रंक की मूवमेंट के में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेपेजिस है, उसका मतलब है रेजेस लोअर्स एंड एबडक्ट्स शोल्डर्स, शोल्डर्स को अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, तो पुल रिब्स अप एंड डाउन, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी लेक्चर में। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पुल रिब्स डाउन एंड इन एक्सलेशन। डायाफ्राम के मसल्स हैं, रेक्टस एब्डोमिनस हैं, फ्लेक्सेस में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल ओब्लिक बॉडी की रोटेशन में हेल्प करता है। तो इट मीन ये हमारे पास ट्रंक के मसल्स हैं, वी शुड नो अबाउट। इसके बाद है मसल्स ऑफ आर्म, तो बिल्कुल बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, और एनोशियस एनोशियस हैं, उसके अलावा ब्रांकियालिस हैं, ये सारे मसल्स, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलस है, और इसी तरह से हमारे पास एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस, ये सारे मसल्स हैं विच आर प्रेजेंट विद इन द arms. So we should know about their morphology as well as their function. Similarly, muscles of the hip and legs. The muscles of hips and legs are also performing a lot of roles. जिस तरह से फीमर के मसल्स हैं तो दे आर गोना somehow help in the rotation. फिर इसी तरह से हमारे पास टीबिया के मसल्स हैं, और मेटाटार्सल्स के मसल हैं, टार्सल्स के मसल्स हैं, सो दे आर वेरी हेल्पफुल इन द ensuring the movement of hip. All right, similarly the muscle of leg, the muscle of legs are mentioned are here, or like pernocious longus, or similarly soleus, pernocious longus, all the muscles are listed here of the legs, and they are gonna perform certain roles in terms of movement, and we know. Similarly muscle of female pelvic floor हैं, coccygeus है, coccygeus levator any, and central tendon muscle, ischium, vagina, urethra, all these muscles are responsible for number of functions and the movement. All of them are mentioned here. Okay, like coughing, forced exhalation, and similarly assist in urination. Transverse perineus muscles are responsible for urination in female, or external anal sphincter closes anus. These are the muscles and performing their role. So this was all about how there are muscles arranged in our body. Mean there are two sort of arrangements of the muscles in our body, and how these muscles are going to perform number of jobs or functions in our body. So this was all about mucoskeletal system, and the muscles include skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. We everybody knows skeletal muscles are responsible for the movement, and they are nucleated. Similarly, everybody knows smooth muscles are present in we can say stomach as well as in the digestive tract,
GI, gastrointestinal tract, and they are responsible for the digestion as well as the peristalsis, antiperistalsis, etc. And where the cardiac muscles are responsible to maintain cardiac output, arterial node potential, and we can say heart morphology as well. So, knowing about the mucoskeletal system and its function is the key. And I hope you guys got some view, some idea how muscles are arranged, how they work, how they construct our body. Thank you for staying. Stay blessed.